जाएंगे। इसमें लगने वाली सामग्री 1 कप कॉर्नफ्लावर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक, और लास्ट में हम नींबू का रस ऐड करेंगे। सबसे पहले हम कॉर्नफ्लावर डालेंगे, फिर जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, उसके बाद हम धनिया पाउडर डालेंगे, उसके बाद हम लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, लेमन जूस। चलिए हम मिक्स करते हैं इसको अच्छी तरह से। इसको हम पतला करने के लिए थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। बेटर इस तरह का होना चाहिए। पहले इसको हम मैरिनेट करते हैं। इस तरह से रखते हैं। इस तरह से अच्छी तरह से पका के हम छोड़ देते हैं। आइए हम सबसे पहले पैन लेते हैं। 150 ml जितना तेल डालेंगे। डालने के बाद इसको थोड़ा सा हम गरम करेंगे। तैयार हो चुका है, देखिए।